Yeah, good morning, friends. Welcome to the session. Is my audio loud and clear? I guess again some issue with camera today, but I guess अगर audio ठीक चल रहा है तो it's okay. So just Venkat, give me a tech check. Either Venkat, Vasu, or Vijay, Dr. Vijay. Audio is loud and clear. Okay. Yeah, I'll either wait for your audio is fine. So I think camera फिर आज गड़बड़ कर रहा है. So start करने से पहले I'll read out the disclaimer. This says it's for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. See, before we start, अगर आप थर्सडे को देखो तो बहुत उथल पुथल हुई है जियो ये ईरान को लेके. एक समय यूएस डाउन था, मिसाइल्स फायर हो गई, फिर बोला 60 दिन का कुछ ये हो जाएगा एंड अगेन इट रिकवर्ड. तो ये जो वॉलिटिलिटी है ना ईरान और ट्रम्प के बीच में जो आ रही है वो हमें झेलनी पड़ेगी. उसका कोई उपाय नहीं है. उसका उपाय एक ही है, हेज करके चलो, स्ट्रेटजी में चलो और संभल के चलो. इम्पल्सिव ट्रेड मत करो. फाइन. सो लेट्स सी व्हाट द हेडलाइंस क्या बोल रहे हैं अभी. So I'll go to investing. Headlines ये बोल रहे हैं अभी, Wall Street futures steady after record closing highs on US Iran peace deal. चलो एक तो है कि पीस डील की बात फिर से होने लगी है, तो इसमें क्या होता है, जो गिरावट है ना वो संभल जाती है और एक बार पुल बैक आ जाते हैं. इसके बाद हम चेक करते हैं इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस में इसका क्या असर है, व्हाट्स हैपनिंग इन द ग्लोबल इंडाइसेस. या वेंकट, टुडे माय कैमरा आई थिंक इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. So it's fine. The charts are important, not my face, Venkat. So US futures देखो तो अभी फ्लैट है, 30 पॉइंट ऊपर है. एशिया देख लेते, बोवेस्पा ब्राजील 830 पॉइंट नीचे, निकाई 300 पॉइंट है. मोरलेस फ्लैट है. इफ यू सी देयर इज नो मच दिस थिंग. अगर देखो तो सब कुछ 0.5% के आसपास सब मार्केट्स है. तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि आज के ओपनिंग थोड़ा ओकेश टाइप रहेगा, बिकॉज हमने जो डिप था वो झेल लिया गिफ्ट निफ्टी में थर्सडे को. आफ्टर दिस लेट्स गो टू गिफ्ट निफ्टी. अगर गिफ्ट निफ्टी हम देखते हैं, इफ यू वॉच गिफ्ट निफ्टी, सी दिस गैप वाज फिल्ड and it has bounced back. So GIFT Nifty is trading 250 points up, right? तो उसमें हुआ क्या है ना, देखिए हमें दो चीज देखनी है. इसको मिरर इमेज बोलते हैं. जैसे इस तरह यहाँ पे वी हैड अ फ्लैग सॉर्ट ऑफ अ थिंग एंड मार्केट नीचे आके एक बार ऊपर तक गया. सिमिलरली हियर आल्सो वी आर हैविंग अ चैनल सॉर्ट ऑफ अ थिंग. गेटिंग इट एवरीबॉडी? अभी चैनल में आप प्रीएम्प्ट मत करो, नीचे ही टूटेगा. टिल इट डज नॉट ब्रेक वी होल्ड. गिव मी यस एवरीबॉडी. Yeah, airdrop 0S001, absolutely. So this is showing that we are right now trading a rising channel, and within the rising channel volatility will be contained. So you have to pick up days which are good, you have to pick up days which are bad. The two things which you can't remove right now is the, for day trading, the VWAP, and for swing trading the 50 and 20-day moving average. ये दो दिन को, दो चीज को आप तो देखना है. After this only we go to, still we don't go to निफ्टी. हम लोग निफ्टी अभी भी नहीं जा रहे. Let's go to इंडिया विक्स. हम लोग अपना प्रोसेस नहीं छोड़ेंगे. तो इंडिया विक्स अगर आप देखो तो लोअर एंड ऑफ द चैनल है. देखिए अगर इंडिया विक्स इस तरह से है तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी इज इनवर्स. निफ्टी इज मूविंग लाइक दिस. नाउ गॉट इट एवरीबॉडी? Give me a yes or a no. Yeah. So which says that VIX is going on the downside. At some point of time VIX should come and settle somewhere around here. ये अभी भी चैनल में है, बट इट हैज ब्रीच द लास्ट लो. तो स्विंग इन द विक्स इज डाउन. अगर स्विंग विक्स में डाउन है तो इट गिव्स सम कॉन्फिडेंस ऑन द इंडेक्स लेवल.
So VIX we have seen nothing very negative from VIX. VIX is okay as far as market is concerned from the positive side. After that we go to Nifty. Please don't go to Nifty directly, that's speculation. So this is Nifty. And in Nifty, what we have seen is this gap, it has filled in the gift Nifty. It is still here pending. But remember, whenever you have कभी भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखता ना तो ये बुलिश फ्लैग बन जाता. Getting my point? It's for 2 to 3 days sort of a thing, and then market moves up. So Nifty is forming a bullish flag, which I pointed out for the last so many days. After this, one thing हमें और एक चीज देखनी है, we have to watch is the Bollinger Bands. It is at the 20-day moving average and 50-day 50 दिन की जो average है, that is somewhere around this low. See, a market which is above 20 and 50 is a bullish, is a positive market. Okay, so that way it's taken care of. So अगर आप देखो तो हम ये बात कर रहे थे कि जब तक 50 दिन का एवरेज नहीं टूट रहा है, the market trend is up. We are seeing a sequence of higher lows and higher highs. How many of you remember this? How many of you remember this? Let me see. Please make a trading diary, note down things. We are doing the sessions in great details. Yeah, Hemant says yes. Dheeraj says yes. After this, let's plan for the day. देखिए गैप अप मार्केट खुलता है तो डे ट्रेडर के लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है बिकॉज इट्स स्ट्रेच्ड ऑन द अपसाइड, बट वी हैव टू मार्क द लेवल्स. लेवल्स की हम बात करते हैं तो फर्स्ट विल गो टू 60 मिनट्स. In 60 minutes, there is a gap over here, which is at 24,118. So any upside from a short-term perspective is this. On the downside, हम लोग ये gap लेके चल रहे हैं, which GIFT Nifty has filled, but I doubt whether we are going to come today or not. But we have to open. So ये मेरा एक structure है markets का. And always remember, we don't ignore the channels. कभी भी मार्केट में एक ड्रिफ्ट आती है ना, immediately take a high, take the lows and mark the channel. So this is how the market is. Give me yes everybody, अगर समझ में आ गया है तो. देखिए पहले आपको पैटर्न समझना है and then trades निकालने उसमें से. So I am getting yes. Vasu 1320 says yes. Fine. Today not getting any likes, so you are not liking this session. Hi Urmila. After this हमें 15 मिनट चार्ट्स पे जाना है. 15 मिनट्स पे अदर देन दिस चैनल हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. So this holds the 60 minutes time frame holds for even a 15 minutes. After that, let's go and see the open interest positions. So I will go to first Nifty spot in my Insta options. Let us see the OI buildup. देखिए अगर OI buildup के बारे में भी अगर आप देखते, इसको हम बोलते OI magnet. Fine. OI magnet means where the highest open interest buildup is. So how many of you read the Substack note on trending OI? So the highest is at 24,000. मॉर्निंग में देखते कैसे, उसके बाद देखिए सीधा ओपन इंटरेस्ट है 24,500 पे और ये 24,200. नाउ हम क्या करते हैं ना, ये 24,200 वाला जो है ओपन इंटरेस्ट, देखिए आज मार्केट खुलेगा, अगर गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे अनवाइंडिंग होगा तो आई थिंक इट माइट शिफ्ट टू 24,200 एंड देयर इज ऑल्सो दिस रेजिस्टेंस ओवर हियर 24,200. स्टार्ट हो रहा रेजिस्टेंस 24,100. सो OI plus price action source 24,100 to 24,200. These are called OI magnets. Okay, everybody clear? I have to, okay, I'll change it to this yellow. Give me a yes or a no. Yes. After this, after market opening,
सी आई हैव एक्सप्लेन इन वीडियो, ये जो हम देखते हैं ऑप्शंस डेटा में ट्रेंडिंग ओआई एंड ओआई चार्ट, राइट, आई जस्ट टेक यू टू द सबस्टैक. तो डेली यू हैव टू डू दिस. इसमें ऐसा है ना, कौन सा स्ट्राइक लेने का, कितने स्ट्राइक्स लेने के, क्या करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स में सारा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने. सो दिस इज द लास्ट व्हाट आई हैव डिड. आई एम जस्ट सेंडिंग यू द लिंक्स प्लीज. और पहले आप पढ़ लो ये जो ओआई मैग्नेट्स की हम बात करते हैं, और उसके बाद सारा टॉपिक्स जो है मैंने एक 9 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ. मेक श्योर यू गो थ्रू इट, डोंट इग्नोर दिस, बिकॉज आज की तारीख में ओपन इंटरेस्ट ओआई मैग्नेट्स काफी वही मेन है ट्रेडिंग में, अगर आप देखने जाओ तो. फाइन. और सामने सैटरडे संडे छुट्टी भी आ रही है. सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट. आफ्टर दैट अगेन लेट्स गो एंड चेक इट आउट. आई एम इन माई दिस थिंग. सो ट्रेंडिंग ओआई में अगर मैं निफ्टी देखता हूं तो ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज ओआई स्टैटिस्टिक्स में अभी कॉल राइटर्स ज्यादा है, बट मोर और लेस अभी आई थिंक स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी है. इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग वेरी मच. इट वाज ग्रेट, थैंक यू धीरज. ट्रेंडिंग ओआई आपको कैसे यूज करना, सी ऑन अ फ्राइडे you had a positive crossover around 11 o'clock, market rallied. After that, you had a negative crossover at 1 o'clock, market declined. So make sure you use trending OI and the individual option chart. इंडिविजुअल ऑप्शन चार्ट में आपको ये देखना है कि कौन से स्ट्राइक, अगर मान लीजिए मार्केट सपोर्ट पे तो वो स्ट्राइक में देखिए कॉल ज्यादा है क्या पुट ज्यादा. अगर क्रॉसओवर आता कॉल बढ़ने लगते, दैट मीन्स दैट एटीएम स्ट्राइक मार्केट विल ब्रेक. और अगर अगर पुट बढ़ने लगे, सच अ क्रॉसओवर कम्स, दैट मीन्स द सपोर्ट विल ब्रेक. गेटिंग माय सॉरी, दिस इज या opposite, yes. So make sure you understand this also. These markets are tricky to trade. इतना सिंपल नहीं है सर ये मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी है. देख वो बोलते ना फूक फूक के कदम रखो, वो वाली मार्केट है. इधर पैसा लगना 5 मिनट में लग जाएंगे, बट मेक श्योर पूरा आप देखिए. आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू वन थिंग, यू हैव टाइम फ्रॉम 9:15 to 3:30. हैव पेशेंस, follow your plan, you will get one or two quality trades. Am I right or wrong, friends? So that was Nifty. Now let's go to backs. Yeah, this is Nifty. If you want, take a screenshot. If you want, note down the levels. So once market gaps up, you have to keep on checking that strike price. Now I go to Bank Nifty. In Bank Nifty also, देखिए ये marking हमारे last sessions. I'll remove it. First, I always go to the daily. See, Bank Nifty looks relatively stronger than Nifty because it is close to the swing high. Now, you are reading the news flow is there, HDFC Bank, blah, 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 but we follow our charts. See, Bank Nifty gave a breakout above this channel. Even Friday को ये channel के नीचे बंद नहीं हुआ. और ये gap जो है ना, ये बहुत बड़ा support है market के लिए. Remember that. और ऊपर में this swing high is going to be the resistance. So Bank Nifty का ये दायरा रहेगा, which is 56,000 on the upside and 54,500 on the downside from the swing perspective. But in the morning session, we figure out the daily. So I'll go to 60 minutes. If I go to 60 minutes time frame, right, number one pattern, there is a channel. Break of channel does give a upside. Fine. Falling channels are always bullish when they give breakout. If I have to take a resistance, then at this high, there is a gap over here, which is 1,000 points above. But first, let's take previous day's high only as a resistance. Got it? Once crossed, then it opens up further possibility that we'll see in 15 minutes time frame chart. After that, once the channel breaks, today's gap might become a support, or else I will stick to this gap. इतना करने के बाद from daily come to 60, from 60 come to 15 minutes. Now we go to 15 minutes. See 15 minutes, drop a line over here, gap यहाँ से start होता है. So this is the first support level. So there is no change whatsoever. Open interest अभी देख के इतना benefit नहीं है because it keeps on shifting. But yes, if you want, you can keep on checking also.
on the this thing. Trending OI and OI chart are the key to right now in the current market. अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट पोजीशन में तो 55,000 पे बिल्डअप ज्यादा है. इफ यू सी इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, so we can't make out from the magnet OI magnet anything right now. Okay, so you have to trade the price action, and the key over here is going to be your trending OI plus the option charts of the individual strike price. Okay, so let's come back to Bank Nifty. So this is how the Bank Nifty is. And remember, when a falling channel, pay attention. Right now, market is all about channels and support resistance. Here there was a falling channel. It broke on the upside. You had a rally. Here also there was a small little falling channel which are called bullish flag. It has an upside. So right now, every move is channelized. Three dominant study right now. Please note it down. One is for intraday channels and for EOD also channels. Number two is the gaps. Number three is call it support resistance, demand supply, whatever name you want to give, give. Support band, I call it resistance band. And fourth from the day trader is VWAP. Follow this hierarchy, please. Okay. And fifth, from intraday's perspective, you have channels, you have gaps, and you have support resistance plus VWAP. I would stop at that. And on the EOD, be aware of your 20 and 50-day moving average. Everybody clear about this part? Give me either a yes or a no. Air drops. Yeah, sir, gap. Absolutely, there's a gap up in Nifty. Absolutely. बट आपको देखना कि गैप सस्टेन करेगा, गैप फिल करेगा, डिप आएगा. ठीक है, टेक्निकल प्राइस एक्शन से बहुत टफ हो जाएगा. यू हैव टू गो टू व्हाट वी कॉल दिस OI statistics and option charts. If you are new, please watch the video. Plus, I have a session today, which is higher time frame studies are traders edge. So if you want to attend, the session is from 4:30 to 5:30 today. Make sure you are there. इसमें हम बात करेंगे एज अ ट्रेडर हम सिर्फ फोकस रखते हैं इन द करंट टाइम फ्रेम, बट वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम. सो हायर टाइम फ्रेम इज व्हाट वी कॉल अ ट्रेडर्स एज. So make sure you register and kindly confirm it to me. Today is from 4:30 to 5:30. So that's all from my side, friends. We are going again to meet at 4:30 to 5:30 and understand higher time frame levels, the trader's edge, which every trader should have and incorporate in his trading. Harpreet says, can you do a session on weekends or later in days as well for people working time? Yeah, you can watch the recording. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day, everybody. We'll meet again in the evening. So airdrop 001. I'll take your question, sir. You said Wednesday market down and gold crashing and 100% Nifty will be going up today. Yeah, that's only after you saw Gift Nifty. Trust me. Fine. As a trader, take step by step, price action by price action, bar by bar.